Hi everyone, how are you all? This is the part second of lines and angles, and today we are going to do theorem 6.1. If two lines intersect each other, then we have to prove that the vertically opposite angles are equal. So I have drawn the figure for you. Here AB and CD, these are two line segments which are intersecting at point O. We have to prove that vertically opposite angles are equal. So we have to prove angle AOC, this angle is equal to angle DOB, this, and angle AOD, this angle is equal to angle COB. So without delay, let's start the proof. Okay, the sum of angle COA plus angle AOD is equal to 180 degree. Why? These are linear pair of angles. These are the adjacent pair of angles which lies on the same straight line. So COA and AOD, these are two adjacent angles which lies on the same straight line CD. So sum of these two angles is equal to 180 degree. This is our equation first. Similarly, the sum of angle COA plus angle COB plus angle COB, this is also 180 degree. Same reason, these are the linear pair of angles which lies on the same straight line AB. ये दो linear pair of angles है जो AB straight line में आ रहे हैं. So इन दोनों angle का sum होगा 180 degree. This is our second equation. So both the equations are equal to 180 degree. We can compare them. We know that if two things which are equal to the same things, they are equal to one another. So on comparing equation first and second, we will compare equation first and second. So we will take the left hand side of both equations, COA plus angle AOD, this one is equal to COA plus angle COB. So COA is on left hand side and COA is on right hand side. We can cancel them. So this gives angle AOD is equal to angle COB. Okay, similarly we can prove for angle AOD, and this angle will be equal to COB. Similarly, angle AOD is equal to angle COB. This is example number second of lines and angles. Ray OS stands on line POQ. POQ एक line है and OS ray POQ में stand कर रही है, and ray OR and OT are the angle bisector of POS and SOQ. Ray OR is a bisector of angle POS. That means angle POR is equal to angle ROS. ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि रे जो OR है ये इस एंगल को POS को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, एंड रे OT बाइसेक्ट एंगल SOQ. जो रे आपकी OT है ये एंगल SOQ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. सो ये दोनों एंगल बराबर होंगे. आप इन दोनों एंगल को A के इक्वल मान लो. लेट अस सपोज both of them is equal to A, and here both of these two angles is equal to B. Now I am also writing here angle POR is equal to angle ROS is equal to angle ROS. You can take both of them equal to A because here angle ray OR bisect angle POS. Okay, you can write the reason for this. And similarly angle SOT is equal to angle TOQ, both of them is equal to B. Same reason here ray OT bisect angle SOQ. Now sum of all the angles, sum of angles POR plus ROS plus angle SOT and TOQ will be equal to 180 degree because all these four angles lies on the same straight line. We know that sum of all the angles which lies on the same straight line, which lies on the same side of straight line, the sum of all those angles equal to 180 degree.
So sum of angle POR plus angle ROS plus angle SOT plus angle TOQ is equal to 180 degree. Angle is on same straight line. Here POR is equal to A. You can put the value of POR. ROS we have taken is equal to A, and SOT is also SOT is equal to B, and TOQ is also equal to B. So all the sum of all these four angles is equal to 180 degree. This gives twice of A plus twice of B is equal to 180 degree. And now value of twice of, you can take 2s common, so twice of A plus B is equal to 180 degree, and this gives the value of A plus B is equal to 180 upon 2, so this is equal to 90 degree. So A plus B, you can write A plus B is equal to 90. A plus B, the A plus B angle ROT, you can write A plus B as angle ROT. So we have proved that angle ROT is equal to 90 degree. This is question number first of exercise 6.1. Lines AB and CD intersect at point O. So AB and CD, these two lines intersect at point O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. Sum of angle AOC and BOE is equal to 70 degree. That means this angle AOC plus angle BOE, sum of these two angles is equal to 70 degree, and angle BOD is given 40 degree. This is angle BOD. This angle is of 40 degree. We have to find angle BOE. We have to find angle BOE. We have to find this angle and COE and reflex angle COE. And आपको COE का reflex angle find करना है. So this is COE angle. We have to find the reflex angle of COE. Okay. So how we are going to solve this? सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो आपका BOD एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसका? AOC का. सो ये दोनों एंगल बराबर होंगे. Okay, just if you ignore this line, so these two angles are vertically opposite angles. So we will write here angle BOD is equal to angle AOC is equal to 40 degree. Both of them are equal to each other and they are vertically opposite angle. Vertically opposite angles. ठीक है, these are vertically opposite angles. So this means that this angle is 40 degree. ये आपका 40 degree आ गया. So आपको पता है कि AOC और BOE का सम 70 है. We know that AOC plus angle BOE, the sum of these two angles is given 70 degree, and we know that AOC is 40 degree. So we can easily find the value of BOE. So put the value of AOC, which is 40 degree, plus angle BOE is equal to 70 degree. This gives the value of BOE is equal to 70 minus 40, which is 30 degree. So we have find the value of BOE and this is equal to 30 degree. Now we have to find the reflex angle COE. We have to find the reflex angle. This is COE and we have to find the reflex angle of COE. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? COE फाइंड करते हैं. ठीक है, तो COE फाइंड करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB या BOE, बात एक ही है, EOB, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री. ये तीनों के तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन AB में आ रहे हैं. सो इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम होगा 180 डिग्री. क्वेश्चन में यहाँ पे AOC और BOE का सम, इसका और इसका सम 70 है ना, तो आप इजीली ये एंगल निकाल सकते हैं. ठीक है, तो AOC और BOE जो है आपका या EOB जो है, इन दोनों का सम है 70 डिग्री. 70 प्लस एंगल COE हो जाएगा आपका 180 डिग्री. तो यहाँ से आप COE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. COE की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. 180 में से 70 माइनस करेंगे, सो COE की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 110 डिग्री. बट आपको यहाँ पे COE की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, आपको रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है. तो किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है तो आप उसे 360 से माइनस करते हैं. ठीक है, तो आप लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल COE is equal to 360 डिग्री
minus angle COE. So 360 degree minus COE, the value of CA is 110. So अब 360 में से 110 फाइंड माइनस करेंगे and it gives 250 degree. This is question number 2. In figure, the line XY and MN intersect at point O. Okay, XY and MN, these two lines are intersecting at point O, and if angle POY is 90 degree, that means ray PO is perpendicular on the line XY, and the ratio of angle A and B, the ratio of angle A and B is given 2:3. Find angle C. आपको angle C find करना है यहाँ पे. Okay, so let us consider, let A is equal to 2x, because A and B का रेशियो गिवन है, आप A को 2x मान लें and B is equal to 3x, B को आप 3x मान लीजिए. Okay, and we know that sum of all the angles on the same side of a straight line is 180 degree. So angle A plus angle B plus angle POY is equal to 180 degree. Angles on same straight line. Angle A is 2x, the value of angle B is 3x, plus angle POY, the value of angle POY is 90 degree. It is equal to 180 degree. So 2x and 3x gives 5x. 5x is equal to 180. We'll transfer this 90 to right hand side and it will become minus 90. The value of 5x is 90. X is equal to 90 upon 5. So it gives 18. The value of x is 18. Okay, that means A is the value of A is 2x. So we'll just substitute the value of x here, 2 into 18, 18 to the 36, and we have taken B, B is 3x, so 3 into 18, 18 to the 54, okay, angle B is 54 degree, we have to find angle C. We know that B and C forms a linear pair of angles, so B plus C is equal to 180 degree, linear pair. We know the value of B, so B is 54 degree, so 54 plus C is equal to 180 degree. Value of C will be 180 degree minus 54 degree. Value of C will be 126 degree. This is question number 3. In the given figure, angle PQR is equal to angle PRQ, and we have to prove that angle PQS is equal to PRT. Okay, now let us start this question. What is given in the question? And it is given that PQR is equal to angle PRQ. Subtract both sides from 180 degree. Subtract both sides from 180 डिग्री. दोनों साइड को LHS और RHS को दोनों को आप 180 में से माइनस कर देंगे. सो 180 डिग्री माइनस एंगल PQR एंड हियर 180 डिग्री माइनस एंगल PRQ. तो एक बार देखते हैं फिगर में 180 में से, अगर 180 में से आप PQR माइनस करेंगे, ओके 180 पूरा स्ट्रेट एंगल होता है, यहां से लेके यहां तक टोटल 180 है. अगर इसमें से आप माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? PQR माइनस करेंगे, ये एंगल माइनस करेंगे. तो 180 पूरा ये स्ट्रेट एंगल, अगर इसमें से आप PQR माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? PQS मिलेगा. ओके, इट गिव्स एंगल PQS बिकॉज द सम ऑफ एंगल PQR and PQS is 180 degree. You can write angle PQR as 180 minus PQS. Okay, and here 180 degree minus angle PRQ. 180 में से आपको PRQ माइनस करना है. 180 पूरा ये स्ट्रेट एंगल है, इसमें से अगर आप माइनस करेंगे PRQ, what you will get? You will get PRT, angle PRT. So this we have to prove. So ये proof हो गया. This is question number 4. In the figure, x plus y
the sum of x plus y is equal to w plus z, w plus z. Then prove that AOB is a line. Okay, so here x plus y is equal to w plus z, and we have to prove that AOB is a line. So let us prove. We know that sum of all the angles about a point is 360 degree. So sum of x plus y plus w plus z, the sum of all these four angles is equal to 360 degree. This gives a complete angle. X plus y plus w plus z is equal to 360 degree because it's a complete angle. Okay, so x plus y, you can replace w plus z with x plus y because w plus z is equal to x plus y. So I'm writing here x plus y is equal to 360 degree. Now x and x gives 2x and y gives 2y is equal to 360 degree, and the value of x plus y, from this you will get x plus y is equal to 360 upon 2. This gives the value of x plus y is equal to 180 degree. 360 upon 2 gives 180 degree. And x plus y, these are the linear pair of angles. Okay, they form the linear pair of angles. These are the adjacent pair of angles and their sum is 180 degree. So they are linear pair of angles. This means that AOB is a line. X and y are adjacent angles and their sum is 180 डिग्री. x and y जो है एडजेसेंट एंगल्स है और इनका सम कितना है 180 डिग्री है. सो दिस implies AOB is a line. ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होते हैं उनकी जो अपोजिट रेज होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. In the figure, POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, and OS is another ray lying between OP and OR. We have to prove that angle ROS is equal to half angle QOS minus POS. Okay, so question में POQ एक line है, ray OR जो है वो PQ में perpendicular है, that means this is 90 degree, and OS एक रे है जो RO और OP के बीच में कहीं पे आ रही है. तो आपको प्रूव करना है कि ROS की जो वैल्यू है वो हाफ QOS माइनस POS होगी. ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. सो आप सबसे पहले ROS को QOS के टर्म में लिखने की कोशिश करिए. तो आप ROS को QOS के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? ओके, सो दिस इज एंगल QOS. अगर आप QOS में से, दिस इज QOS, इसमें से अगर आप 90 माइनस करेंगे तो आपको ROS मिल जाएगा. तो आप लिख दीजिए एंगल QOS minus 90 degree. This is our first equation. Now try to write ROS in terms of POS. So ROS को POS के टर्म्स में, ROS को POS के टर्म्स में आप लिखने की कोशिश करिए. So POS आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, so आप लिख सकते हैं 90 डिग्री. दिस इज 90, so remaining part will also be 90 degree. So 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री माइनस एंगल POS. अगर आप 90 डिग्री में से POS माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ROS 90 डिग्री माइनस एंगल POS. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड बोथ इक्वेशंस. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करिए. So ROS and ROF gives twice of angle ROS, and here QOS minus 90 degree, and here plus 90 minus angle POS. This is minus 90 and this is plus 90, they will be cancel out, and it gives angle QOS minus angle POS, and this is twice of angle ROS.
So you can write angle ROS, you will transfer this 2 to right hand side and it gives 1 by 2 angle QOS minus angle POS. So this is done. This we have to prove and we have proved this. This is question number 6. It is given that XYZ is equal to 64 degree. Angle XYZ, this is given 64 degree and XY को आपने प्रोड्यूस किया 2 point P. Draw the figure from the given information. If ray YQ, जो YQ ray है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYP को, ZYP एंगल को बाइसेक्ट करिए, दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड वी हैव टू फाइंड एंगल XYQ. आपको XYQ फाइंड करना है. दिस इज XYQ, ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है एंड आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल QYP. आपको QYP का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले आप इन दोनों एंगल को किसी सेम वेरिएबल के इक्वल मान लो. आई हैव टेकन बोथ ऑफ देम इक्वल टू x. सो आप लिख लीजिए एंगल ZYQ is equal to angle y is equal to angle QYP is equal to x. okay, why? because यहाँ पे जो YQ रे है वो एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, सो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और मैंने इन दोनों को एक x वेरिएबल के इक्वल मान लिया. अब यहाँ पे तीनों एंगल का सम, इसका और इसका और इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज ऑल दीज थ्री एंगल्स लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. So I'm directly writing x plus 64 degree is equal to 180 degree. All these three angles lies on the same straight line xy, py. So sum of all these three angles will be 180 degree. X plus x give 2x plus 64 is equal to 180 degree. 2x is equal to 180 degree minus 64. So 2x is equal to 180 degree minus 64 gives 116 and this gives the value of x 116 upon 2. 116 upon 2 gives the value of x 58. This means that these two angles are equal and they are equal to 58 degree. Okay, so you can write angle ZYQ is equal to angle QYP is equal to 58 degree. Now what we have to find? We have to find angle XYQ. You can write angle XYQ as a sum of two angles. Which two angles? XYZ, angle XYZ is ZXY or XYZ plus angle ZYQ XYZ is 64 degree. It is given the question. This is 64 plus this is 58.